जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं मेजर डीपी सिंह नेवर से डाई का नया शो फिर से आपके सामने हाजिर हूं। इंडियन मिलिट्री एकेडमीज में ट्रेनिंग इज टफ एट टाइम्स। कैडेट्स डू गेट इंजर्ड। अगर इंजरी बहुत सीरियस और ग्रेव हो, they are aware that they may not be able to continue with the training. But sometime छोटी दिखने वाली चीज भी जिंदगी को हिला देती है। ऐसी ही कुछ कहानी है अनुनया की। कैडेट अनुनया जो ओटीए में थी, वहां से शी गॉट बोर्डेड आउट। क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड हाउ डिड विद हर नेवर से डाई एटीट्यूड शी कंटिन्यूड फेसिंग चैलेंजेस फॉर नेक्स्ट 10 years. Let's welcome Anunaya. Anunaya, welcome to the show. Thank you so much, sir. Thank you so much. Coming straight to the first question, Anunaya, you were about to get commissioned from the OTA Chennai. फिर क्या हुआ कि OTA से आपको बाहर आना पड़ा? I was in the second term of my training, but in April 2010, I sustained an injury during a run. It was a fracture, neck of femur, right leg. In next 6 months, I underwent 3 surgeries. The first surgery didn't go well. They had put some implants in my legs so that the bone joins again. Unfortunately, a part of those implants broke. Those implants had to be removed in the next surgery, and fresh implants were put there. But I had thought this was the end of the plight. However, it wasn't. It took one more surgery for the bone to finally start healing. So a series of surgeries and then boarding out of the army. You were initially hopeful कि OTA वापस चली जाओगी, but finally when you heard that statement कि अभी आप continue नहीं कर सकते, how did you feel? When I met the doctors at Delhi, I was told that I will not be retained in army, and that came as a shocker. First time after getting injured, I felt lost. Right. Suddenly, everything seemed slipping off my hands. Numerous X-rays, bone density tests, and whatnot, and nothing seemed to work for me at that moment. I just wanted to get back on my feet. It's a little strange, but I was happy the day my surgery was scheduled because I thought this is it. This is the end of the plight. इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी वजह से मुझे और हॉस्पिटलाइजेशन देखना पड़ेगा, पर ये हो नहीं रहा था. Like I said, the second surgery also didn't work out. It took one more surgery, more hospitalization, more X-rays, more reviews, and for the damaged area to start healing. So I felt shattered. It would be totally untrue to say कि बुरा नहीं लगता है, बुरा लगता है, तकलीफ होती है. However, I had no choice but to stay strong. So I used to tell myself all the while that I have to be able to walk on my feet again. And once that happens, I could rebuild my life because I always believed in hard work, and I thought कि ये मैंने पहले भी किया है तो मैं फिर कर लूंगी और कुछ ना कुछ हो जाएगा. My life, which looked very much into pieces at that moment, I used to tell myself ये सब दोबारा से बन सकता है. प्रायोरिटी है अपने पैरों पे खड़े होना, वो कर लो. तो वहीं फोकस करने की कोशिश कर रही थी. I think this is the thought that kept me going in that moment. So you saw the new normal in your life when you were undergoing various surgeries. How did you manage those days? और फिर कैसे अपने आप को motivate करके you accepted the new reality that now you will not be able to go back to OTA? This new normal had one more aspect attached to it, that I was still not able to walk on my feet. I used to walk with a walker. Later, I switched to a crutch. So I needed a support. This was more difficult to accept at that time. कि चल ही नहीं पा रहे हैं पैरों पे, अब ये भी होगा कि नहीं होगा कभी, पहले तो ये चीज देखनी जरूरी है. So I really needed to distract myself from all these negative thoughts at that moment in order to believe myself कि नहीं ठीक हो जाएगा. If I kept thinking in that direction, नहीं हो रहा है, तो शायद मेरे लिए चीजें और difficult हो जाती. नहीं होंगी. Fortunately, I met a few people at the hospital. उनसे मिलके मुझे लगता है कि मैंने वो सारे positive energies उनसे भी derive किए. I saw there were cases जो मेरे से ज्यादा severe थे. I saw people who were
aging, and they were still fighting for getting better for their injuries and everything. I thought ये लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए. Right. And I'm very talkative in general, so I used to talk to a lot of people around. उनसे जो बातें होती थी, जिस तरीके के acts, the smaller act of kindness that I've seen in their behavior towards me, all those things kept me going. That positivity that I derived from them, वो मेरे लिए इस नए नॉर्मल के साथ कोप करने में इजी रही. आई स्टार्टेड गिविंग अ थॉट टू व्हाट वुड आई डू आफ्टर आई एम ओके. वे ठीक तो होना है, पर आगे आप क्या करोगे. आई डिसाइडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज. I got some books, I started reading. I could understand nothing at all. I just read so that I don't think negatively. I just read. Distraction बहुत जरूरी था नेगेटिव चीजों से, वही करने की कोशिश कर रही थी. डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ आई एम श्योर ये वाला थॉट भी आपके दिमाग में आता होगा कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं, जो कोर्समेट्स हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड आई एम स्टिल स्टक. हाउ डिड यू मैनेज टू कर्ब दैट नेगेटिव फीलिंग ऑफ योर्स? When my surgery was getting done, the second surgery, एक दो दिन आगे पीछे मेरा कोर्स पास आउट हो रहा था, तो वो 2 दिन बड़े दुख भरे थे. ऐसा लगता था कि आई एम लेफ्ट आउट, आई एम अलूफ, सब लोग आगे निकल गए. बट the very same day, people who got commission, of course they were busy rejoicing, but they took out some time and they called me to check upon me. It felt good, so I was happy for them, and this little gesture of them made me believe in myself again. मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा देर से सही पर कुछ हो जाएगा. I think I've been very optimistic since very starting in my life. तो थोड़ा सा टेम्पररीली डाउन फील होता है, उसके बाद जल्दी रीगेन कर लेती हूँ होप. इस पूरे प्रोसेस में कभी ना कभी तो ऐसी फीलिंग भी आई होगी, गिविंग अप टाइप ऑफ फीलिंग कभी तो आई होगी. ऑफ कोर्स इट्स नॉर्मल, सबको ऐसा महसूस होता है, मुझे भी हुआ. शायद हॉस्पिटलाइजेशन से ज्यादा जब मैंने रीस्टार्ट किया अपना जर्नी, मैंने जब अपने स्टडीज दोबारा स्टार्ट किए, I started preparing for civil services, different exams I wrote. हार्ड लक वहां पे नहीं हो पाया. वो टाइम शायद ऐसा था जब मुझे सबसे ज्यादा ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारा समय जिंदगी में चला गया है और चीजें वैसे नहीं हो पा रही हैं जैसा सोचा था. जितना सोचा था उसका 50% भी नहीं हो पाया. तो अकेला भी लगा, डिप्रेसिंग भी लगा. लोग अगर फोन करते थे, पूछते थे और क्या चल रहा है, तो उसका कोई आंसर नहीं होता था. I stopped taking calls from people. Ultimately, it is you that drags you out of that feeling. आप खुद को तभी निकाल सकते हो. एक सपोर्ट सिस्टम होता है आपके आसपास, लेकिन कहीं कहीं आपको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है. आई थिंक आई वॉज अवेयर इनफ सिंस वेरी स्टार्टिंग कि मुझे कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं. एक सर्टन पॉइंट पे जब सैचुरेशन आ गया, मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो रही, मुझसे एग्जाम्स भी नहीं क्लियर हो रहे, कुछ नहीं हो पा रहा था, तो आई न्यू कि मैं अगर ये छोटी मोटी चीजें कर लूं, शायद मेरा दिमाग निगेटिविटी से दूर जाएगा या मुझे अच्छा लगेगा. आई हैड लर्नड कथक लॉन्ग बैक बिफोर OTA. I had gained a lot of weight. I could not dance as I did before, but जो भी थोड़ा बहुत कर सकती थी, तो म्यूजिक प्ले करके कुछ किया, थोड़ी देर में अच्छा लाइट हेडेड फील होता था. ये सारी चीजों ने इन सब बातों से निकलने में हेल्प. ऑल्दो एज अ कैडेट हमें एक्सक्रेशिया मिलता है, बट द अमाउंट इज वेरी स्मॉल. इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट. और एक छोटे शहर में भी आई थिंक एक सिंगल बंदे को सपोर्ट करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है. तो कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो कोशिश कर रहे थे. What exactly you are doing now? I am now a post-graduate teacher at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Jodhpur. I have joined this school in 2019. Late realization in life, but I enjoy teaching. तो 10 साल के challenges ने अनुनया को क्या बनाया है? I think I'm more patient, more receptive, more resilient, and more sensitive towards things. There are experiences that I have been through, my plight, my pain. If I see anything similar happening in somebody else's life, 10 years ago, I would have sympathy towards those people. I think मैं एक स्टेप आगे आ गई हूँ. अब सिंपैथी नहीं होती, अब एम्पैथी होती है. हम I
थिंक कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दोज सिचुएशंस. मुझे पता है कि यहाँ से आप कैसे निकलेंगे. एंड शायद मेरा इनोसेंस थोड़ा सा और सेंसिटिव हो गया. कई बार कुछ लोग बताते भी नहीं है, पर पता चल जाता है उनके बिहेवियर से कि कुछ गड़बड़ है इसके साथ. एंड आई ट्राई, इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर देम, इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस. कुछ थोड़ा संतोष महसूस होता है अगर हम थोड़ी सी एम्पैथी लोगों के प्रति रख पाए. Do you think that OTA training also played a part in making you what you are today? It did, surely, because before OTA, I never went out of my comfort zone. I was always at home. OTA was one place जिसने पहली बार खींच के अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकाला. एंड there's a phrase used in academies very often. They tell you it's all mental. ये सब दिमाग का खेल है. इट्स ऑल मेंटल, इट्स ऑल मेंटल. तो ये उन्होंने जो वहां से भर दिया था, अंदर सिस्टम में आ गया था डिफॉल्ट सेटिंग. तो इट्स ऑल मेंटल. इफ यू थिंक यू कैन, यू विल बी एबल टू डू इट. वेरेवर आई हैव वर्कड इन हाउएवर सिचुएशंस, that thing helped me a lot. That it's all mental. At least you think कि आप कर लोगे. आप मना तो नहीं करोगे ना पहले डे से, अरे सर ये तो नहीं होगा, मैडम ये तो नहीं होगा. वो नहीं होता है. You at least try, and that's very important. Do you carry, as of today, any grudges towards anybody? All of these things that happened in my life, they dragged me out of my comfort zone. And all this while, I've learned a lot. I made mistakes, I corrected them later on, and I kept learning. It's a process where you learn from your own mistakes first, and then eventually if you want, you can learn from others' mistakes too. True. So I did both, and I think I've lived my life on my own after all this happened. I was not doing this prior to it. So I don't hold any grudges or any regrets. I'm more thankful towards life. That's a very beautiful thought. Instead of having grudges, you are having gratitude towards those challenges. Amazing. So my last question to you, Anunaya, is what is your mantra for happiness? Effort and acceptance. Exactly. Even before all this happened in my life, I believed in hard work, and I thought I should not uh, repent, or I should not have any sort of regret the day I leave this world. Things may or may not take the course as we want, but we must not repent that we didn't try. So at least I will not be remorseful that I did not put my best foot forward. तो एफर्ट करते रहना चाहिए जो भी आप चाहते हैं उसके लिए. वो नहीं हो रहा तो कुछ और कीजिए. एज लॉन्ग एज यू वांट टू डू समथिंग, यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग टू डू. द अदर पार्ट इज एक्सेप्टेंस. ये एक ऐसा हिस्सा है जिसपे शायद सबको जिंदगी भर काम करना होता है. एक समय ऐसा था जब मैं भी एक्सेप्ट नहीं करती थी कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो फिर चीजें क्यों नहीं हो रही हैं. बट इवेंचुअली आई एक्सेप्टेड दैट every person has some purpose in life, and eventually there is a factor जिसको हम कभी लक कहते हैं, फेट कहते हैं, फॉर्चून कहते हैं. इट टेक्स यू देयर. मे बी माई पर्पज ऑफ लाइफ वॉज डिफरेंट देन आर्मी, इसलिए शायद मैं आज यहाँ हूँ. आई एम टीचिंग. इट इज द प्लेस वेयर आई डिडंट वांट टू बी in the first place. I, for instance, never wanted to get into school teaching, but now I enjoy being among the students in the class. All the classroom interactions are a great source of positivity for me and learning. Learning not just for the students, but also for me. So learning to accept things as they come your way is one thing that is very important for being happy, I think. And I won't say that I don't panic at times, I do, but I try to accept, and one must try to accept things as they come their way. Great. You are at the right place because we need teachers like you to shape up the future better of this country and this earth. Thank you so much. Thank you. Thank you for having me, sir. Acceptance and efforts. Keep on putting on your best of efforts, but accept what is your reality. That's the mantra of happiness. Till we meet next time with a new episode of Never Say Die.
Take care of yourself. God bless. Jai Hind.